Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Queues extending over a kilometer. Passengers eager to go home. Police trying to maintain order and social distancing. These were the images outside the New Delhi railway station on Tuesday as the first batch of passenger trains left the national capital for major stations across the nation. This as the railways eased the nationwide lockdown imposed in the wake of the coronavirus pandemic. We are outside the New Delhi railway station where the first round of passenger trains are all set to leave from New Delhi for 3 locations across the country. In fact, trains will be going to Dibrugarh, Bengaluru and Bilaspur today. As you can see, queues are extending into kilometers on both sides of the entrance of the New Delhi railway station. People here have been lining up for hours. The police are trying hard to maintain social distancing, but as you can see, at least 1,000 people have gathered here right now in the midst of a pandemic. Now, thermal checking will be done inside the railway station and people have been asked to install Arogya Setu app on their phones. Railways rules ordained that only those with confirmed e-tickets will be allowed inside. Thermal checks were also conducted inside the station before entering the platform. हमने वॉलंटियर लगा रखे हैं अपने और सारे वो करके और सबका टिकट चेक किया है दूर से सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए। अच्छा। और वो कर रहे हैं। और अलग लाइंस बनाए हैं आपने तीनों? अलग लाइन है। अच्छा। और सर थर्मल प्रेफरेंस दे रहे हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन है या लेडीज है, बच्चे हैं, उनको हम अलग से वो कर रहे हैं। कोई ऐसा है टिकट के बिना आ गया उनको गाइड कर दिया हमने। जो कंफ्यूजन था लोगों को वो गाइड कर दिया और दिल्ली पुलिस के उससे भी डाल दिया सारा। जिनके पास लेकिन जितनी टिकट बिका वो आए हैं। Civil volunteers and youth congress workers were also spotted ensuring 3 separate queues for the 3 different trains scheduled for Tuesday. लाइन को जिस तरह से मतलब कि लाइन लोगों की मिक्स हुई पड़ी है ना, जैसे बिलासपुर की और अपना डिब्रूगढ़ की दोनों के लोग मिक्स हुए पड़े हैं, हम उनको अलग अलग लाइन के अंदर करवा कर जिससे परेशानी ना हो। इस तरह से धूप भी पड़ रही है, लाइन भी है, स्टैंडिंग भी करानी है, सब कुछ करवाना है, तो इसलिए हम गुवाहाटी डिब्रूगढ़ वालों को अलग से करवा रहे हैं और बिलासपुर वालों को हम अलग से करवा रहे हैं, इससे दिक्कत किसी को ना हो और सबकी एंट्री जो है आराम से हो जाए और किसी को कोई परेशानी ना हो किसी को। On Tuesday, 3 trains bound for Bilaspur in Chhattisgarh, Dibrugarh in Assam and Karnataka's Bengaluru left New Delhi. Northern Railway CPRO told ThePrint that all the trains were running to full capacity, but not all had found it easy to book tickets. नहीं, टिकट मिलने में तो बहुत परेशानी है। 4 बजे से 7 बजे तक 5 जन बैठे थे, 5 लड़के मेरे बैठे थे। अच्छा, फिर कितनी देर में मिली आपको टिकट? अब वो बच्चों को मिल गई और यहाँ 2 घंटा खड़ा करके रखे हैं धूप में। अच्छा, तो आप यहाँ से आप पहले बिलासपुर उतरेंगे या रायपुर पहले? While the salaried middle-class passengers had come armed with the mandated Arogya Setu app on their phones, those from the economically weaker sections were not even aware of the app. और नहीं समझे हम। अच्छा, आपको नहीं पता है। और आपने खाना और ब्लैंकेट वगैरह सब ले लिया? हाँ, खाना वाना सब। हाँ, मेरे मोबाइल में नहीं है, छोटा मोबाइल है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा, आपके पास नहीं है तो आपको मिस कॉल देना पड़ेगा, शायद वो पेपर में आया था। नहीं, अभी हम लोग किए, मोबाइल दुकान में भी कहते नहीं हो पाया, बोले इस मोबाइल में नहीं आया सुविधा। Railways COVID-19 rules also ordain that despite a Rajdhani, no catering services will be available. Passengers also had to get their own bed linen. For some, the cost of the ticket was so steep that they were left with no money for food. जब थाने में गया तो थाने वालों ने इनकार कर दिया कि भाई हमारे पास कोई साधन नहीं है। मैंने कहा भाई क्या करें, हमारी गाड़ी छूट जाएगी, हमारे पैसा फालतू में चला जाएगा। बोले भाई मेरे पास कोई नहीं। फिर मैंने कहाँ से आए हो आज? अभी तो मैं कोचनपुर से। कहाँ से? कोचनपुर। कहाँ है? कोचन द्वारका सेक्टर 23 कोचनपुर। अच्छा, तो फिर कैसे आए आप? फिर हमारे जो भाई साहब रहे उन्होंने एक गाड़ी कराई, 2 गाड़ी, तो उसमें 2 आदमी करके आए, उसमें 2200 रुपये लिए। फिर उसका पैसा किसने दिया? हम ही लोगों ने दिया। आपके पास था इतना? नहीं था, एक दूसरे से मांग के ले दिया। कितने लोग आए? हम लोग 6 आदमी। Many passengers who were left without an income after the lockdown were now simply happy to go home. My industry has collapsed and there's nothing to do much in Delhi right now. So, well, I can have food at my home
They'll be providing food at least to me. Did you live on rent over here? Yeah. So did you have problems paying rent? Yeah, of course we were facing because the discounts were for the students. Charges वगैरह सिर्फ students के लिए हटाए थे. So like we had to pay our rents. But with crowds swelling outside the station, some claimed that they were scared of contracting the virus. Mainly because of my family's concern. I was staying alone here, so But there's a huge crowd. Aren't you afraid that you might there catch? is. I was scared about it. Like it's quite risky going home right at this point of time. Did you expect that there would be such a huge crowd? Yes, I was expecting it. Like to be honest, I was expecting like more. More than this. But when the first train finally left New Delhi station, only eager and happy faces waved back, relieved that they finally were on their way back home. This is Sravasti Dasgupta reporting for ThePrint in New Delhi.